Hello everyone. Today, in the current affair discussion start Purboru, we will discuss what an inspiring story from the animus who has fulfilled his late mother's dreams and backs All India Rank 2 in UPSC 2023. So obviously, Borsosara, as we are discussing the news for the UPSC, and especially I do focus for the UPSC, though it's written like the OPSC and OASHUB, but I do focus apart from the OPSC, and especially I do like to focus on the UPSC. So ସେଥିପାଇଁ obviously the result ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ଆମକୁ ତ ଟିକେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଇନ୍ ଦ ପାର୍ଟ 2 ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଆଜିର ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆନିମେସ୍ କଥା ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଟପର୍ସ ଦୋଜ୍ ହୁ ହାଭ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଦ ର୍ୟାଙ୍କ फ्रॉम पर्टिकुलरली एवसे ओडिशा। तो अनिमेस कथा जी डिस्कस करवा ओबियसली समझते जानी कि रैंक 2 कि आफ्टर लगभग कम के 20 years, आफ्टर 20 years जदि इफ समवन फ्रॉम ओडिशा हैज one digit rank, and that to be close to Rupa Misra, the topper who used to be the topper, and sorry, the topper was the topper. And this guy from Raulkela, the NIT Raulkela students, has done pretty well in what examination 2023. Recently, I mean, yesterday itself, the rank came from the Talcher, 24 years old. So this guy is also young. That means hailing from what that is Valu Gadia village in Talcher, the Talcher district से belong करेंसी, and obviously that means हमें कहबा कि NIT राउरकेला से पढ़ी चंती जा भी सबुठु that means the inspiring story एथिपे हमें कहू जे कि जदि तमे तांकर कैरियर को देखिबा, he is a very good student. Even I went through some paper, he was having 98.8 or 9% in plus 2. So overall, he has been a pretty good student throughout his career. ସବୁଠୁ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ କଥା ହେଉଛି କି ତାଙ୍କ ମା ଲାଷ୍ଟ ଜାନୁଆରୀ ହିଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାନ୍ସରରେ, ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଫାଦର ଏକ୍ସପାୟର୍ଡ, ତାଙ୍କ ମତଲବ ହାଜ୍ ପାସ୍ଡ ଆୱେ when he was 11th କ୍ଲାସ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଥିଲା 11th କ୍ଲାସ୍ରେ। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାଙ୍କ neither his father nor his mother is remain, both have passed, but this guy has done pretty well। ତାଙ୍କର ୱିଶ୍, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ୱିଶ୍ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିଛି। he is also having a sister who is doing job in somewhere agriculture like that, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। apart from that ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, that ଆଦିତ୍ୟ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ rank 1, obviously ଆମେ କହିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସରେ IPS ଅଲରେଡ଼ି ଥିଲେ ସେ, ଆଣ୍ଡ ଟଫ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଥର IIT କାନପୁର। ତ ସେ କେଉଁଠୁ ଆସନ୍ତି? ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱାଟ୍ IIT କାନପୁର, ସରି ଆଦିତ୍ୟ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଚେନ୍ନାଇ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା तो सी आसती टॉप रैंक जोटा आनी। देन श्रीवास्तव 27 हेल्स फ्रॉम द लखनऊ उत्तर प्रदेश हैड कंप्लीटेड हिज बीटेक, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT कानपुर। तो दैट मीन्स आदित्य श्रीवास्तव कानपुर IIT। रैंक 2 जदि आम देखा NIT राउरकेला, तो कौटी ना कौटी जदि देखा कि NIT IIT आइजर नाइजर and other Indian institutes, I would say those are the national level Indian institutes, their students, they are dominating the UPSC pretty good। I mean देखिबा कि since 2010 ରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, since 2010s they have been dominating this examination, the top most examination in the country। that ଆମେ कहବା खास କରିକି NIT IIT आइजर नाइजर, and I would say the management as well, the Indian School of Management ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା तो खास करी ପିଲାମାନେ ବହୁତ dominate କରୁଛନ୍ତି, and they are really doing pretty well। obviously there are also the good students and coming from the good backgrounds as well। I would say that is the education backgrounds they are pretty good। ये DAV कॉलेज रे पढुଥିଲେ राउरकेला रे, DAV कॉलेज मतलब स्कूल, सॉरी DAV स्कूल रे मध्ये पढुଥିଲେ। तो जहाँ भी हो दैट मीन्स ही इज हैविंग ए प्रेटी गुड, आम कहवा बहुत बढ़िया एफर्ट देइचंती, एंड लाउडेबल एफर्ट जहाँ आम कहीपर, नो डाउट ये 7 नंबर पेज को जब आसवा आउ कि आम टपर्स मान कथा डिस्कस करवा OPSC, खास करी जब आम कहवा UPSC कहीं जेहेतु आज दे बिलंग्स टू द ओडिशा, दैट इज वाई वी विल डिस्कस देम। कहीं ओबियसली आम तो वर्ष सारा से ही डिस्कस करूचे न्यूज़ वगैरह, एंड they will really inspire when you मतलब listen to their stories,
their success, that will really inspire. So that is why I thought okay, we will have little bit of talk on that. So here you can see the आम जदि कहबा बाकी जो पिला माने हमर अछंती तो apart from that means animes पारे जदि आम देखिबा बाकी मध्य that means OPSC बा सॉरी जा मु कहबी UPSC जो खास करी हमें आमर कौन कर देखिपर तांकर स्टोरी मध्य एठी मध्य दिया जाइछि टोटाल आमर मोर देन 10 स्टूडेंट्स ओडिसा रु क्वालिफाई करछंती तो एठी तुम देखिपर तांको फादर्स मतलब नांती तांको फादर मदन कर 20 थिला से तो एग्जामिनेशन जदि हम देखबा एनिमीस who started preparing the examination in 2022 रे स्टार्ट करथिले तो तापरे जदि हम कहबा दैट मींस 2 इयर्स व्हाट एफर्ट 2 वर्ष रे हम कहबा एनआईटी राउरकेला स्टूडेंट्स सोशियोलॉजी विथ व्हाट सोशियोलॉजी ऑप्शनल तांकर थिला सब्जेक्ट थिला सोशियोलॉजी सो जदि हम कहबा दैट इज व्हाट ऑप्शनल कथा जदि हम कहबा इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन सोशियोलॉजी तांकर थिला पर्टिकुलरली तो ऑब्वियसली हम कहबा फेमिनिस्ट स्टडीज जदि हम डिस्कस करबा डीएवी कलिंग नगर कलिंग जोटा कि हमर सेटू से पास आउट आज स्टूडेंट जदि एनआईटी राउरकेला तो बहुत बढ़िया एफर्ट दैछन्ते अपार्ट फ्रॉम दैट आम जदि खाली कहबा निमेश कथा नहीं बाकी भी अदर एस्पिरेंट्स मध्ये भी क्वालिफाई करछन्ती जेमति तुम देखि परिबो आज 10 एस्पिरेंट्स फ्रॉम द ओडिशा दे हैव सिक्योर्ड रैंक्स लाइक प्रज्ञानंद गिरी कथा नहीं दियो उषासी प्रधान कथा नहीं जाओ 24th वाला जो रैंक थिला ज्योग्राफी ऑप्शनल्स नहीं थिला तांकर मते ज्योग्राफी ऑप्शनल थिला एंड दे हैव दैट मींस रैंक 2 रैंक 24 रैंक 36 रैंक 52 रैंक 60 रैंक 110 so 319 343 466 and obviously हम कहबा apart from that also 204 रैंक भी रही 575 रैंक मध्ये रही 1001 रैंक मध्ये रही so many candidates they have succeeded this time that means एथरो जदि हम देखिबा बहुत बड़े सक्सेस ओडिसा पिला आनचंती and that is obviously हम कहबा एथि पे हम डिस्कस करूचे ताकि that will inspire you as well and the animes स्टोरी तो आम ऑब्वियसली आम देखि सारचे जे तांको स्टोरी मध्य तो ऑब्वियसली इंस्पायरिंग स्टोरी थिला आम देखिथरा कि मोर देन बहुत सारा कैंडिडेट आमर कोन करछन्ती एई थरो सक्सेस हेइछन्ती तो फास्ट एई पार्ट को मु एथि रखिबे देन आम सेकंड पार्ट जो एडिटोरियल डिस्कशन को आसीबा तो दिस इज स्मॉल पार्ट एंड होप कि हां जो बने भी मतलब प्रीलिम्स होनी लेट्स से एनिमेस कथा मु कहनी कि मतलब हाँ ही हैज 2 इयर्स जदि तांकर आमे प्रिपरेशन देखबा तो बहुत बढ़िया एफर्ट थिला 2 इयर्स मतलब ग्रेट एफर्ट मु जदि कहबी तो बाकी सही भले जदि आमे अदर्स जो माने भी अछंती हाँ कोनोसी प्रकार जदि आमे कहबा दोज हु आर डोंट हैव वेरी गुड लेट्स से आमे कहबा स्कूल बैकग्राउंड किबा कॉलेज बैकग्राउंड के एनआईटी नो आईआईटी नो सिंपल गोटे छोटो कॉलेज रु आसीचंती तो दे विल हैव ए एफर्ट हाँ से मन को टिके अधिक एफर्ट देबा को पड़ियो फुट यू हैव टू फुट द गुड एफर्ट हाँ क्या समस्त से अपरच्युनिटी न था समस्ते से लेवल न था कि आईटी एनआईटी नाइस राइजर्स रु आसो कि आम कह बट इंडियन मैनेजमेंट स्कूल जदि आम कह से तो आसीपारती बट यू हैव टू एफर्ट कंटिन्यूअस जदि एफर्ट देवे केवे ना केवे हो पार बट आम डिस्ट्रक्ट हेले चलो ना तो जहाँ भी हो विथ दिस आई विल एंड बट वी आर आई एम ऑल्सो फोकसिंग फॉर द मेनी स्टूडेंट्स जो मैंने भी ओडिया स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स अच्छा दोज हु आर रियली लुकिंग फॉर द मेंटरशिप्स दे कैन ऑल्सो कंटैक्ट अस बिकॉज at this times we are having a group of UPSC some about around 10 students. I am having 10 students, a group, small group. We are discussing each day okay, what would be the strategy, how to prepare all these like a group study group you may say that group we have formed and like that you can also be part of that discussion part and I really want keep more and more candidate and the more and more aspirant and the more and more people do secure and must secure the ranks from Odisha. That would be the more inspiring. And with this, I will once again congratulate this Animesh Pradhan. He has done really hats up to this man who has lost everything to secure this UPSC.